गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने स्टैंडर्ड 7th में प्रथम पाठ जो चबूतरो था चित्रपाठ उसके बारे में पढ़ चुके हो। सेकेंड चैप्टर पर्वत तारा के बारे में भी पढ़ चुके हो। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर 3 जो है वो है उसका नाम मेहनतनो रोटलो। ठीक है, ये चैप्टर है एक बोध कथा है। इसमें हमें बोध मिलता है, सीख मिलती है। वैसे चैप्टर को हम क्या बोलेंगे, बोध कथा। जिस चैप्टर्स में हमें कुछ सीखने को मिले या कुछ अच्छे सा शीर्षक हो उसका, तो उसे हम बोलेंगे बोध कथा। तो बाळ મિત્રો આ પહેલા હું તમને એક વાર્તા કહી સંભળાવીશ। આપણે સ્વામી વિવેકાનંદ તો બધા જાણતા જ હશો। સ્વામી વિવેકાનંદની એક વાર્તા છે જે ખૂબ જ આપણને મજા કરાવે એવી વાર્તા છે। તો બાળ મિત્રો આ વાર્તા તમે પહેલા શાંતિથી સાંભળજો, એના પછી હું તમને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછીશ। स्वामी विवेकानंद एक दिवसे नदी किनारे विहार करी રહ્યા હતા, मतलब ફરી રહ્યા હતા। એવામાં એક ભિખારી આવે છે અને એમને કહે છે કે મને 1 રૂપિયો આપો। ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદ એને શું કહે છે સામે કે હું તને 1 રૂપિયો નહીં પણ 100 રૂપિયા આપીશ। તું મને તારા બંને હાથ કાપીને આપી દે। હું તારા બંને હાથના બદલે કેટલા રૂપિયા આપીશ? 100 રૂપિયા આપીશ। ત્યારે જે પેલો ભિખારી હોય છે તે શું કહે છે કે ના, હું મારા બંને હાથ ન આપું। પછી સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે હાથ ના આપે તો કાંઈ નહીં, તારા 2 પગ જે છે તે મને કાપીને આપી દે। તું એના બદલામાં હું તને 1000 રૂપિયા આપીશ। કેટલા હજાર? 1000 રૂપિયા આપીશ તને। તો પણ ભિખારી ના પાડે છે। પછી સ્વામી વિવેકાનંદ હોય છે એ ભિખારીને સમજાવે છે કે ભગવાને તને 2 હાથ આપ્યા છે, 2 પગ આપ્યા છે, तो तू मेहनत शा माटे નથી કરતો અને ભીખ માંગીને ખાય છે। એટલે પેલા ભિખારીને યાદી આવે છે કે ખરેખર આ સાધુની વાત તો એકદમ સાચી છે। હું ભીખ માંગીને 1-1 રૂપિયો ભેગો કરીને જે ખાઉં છું એના કરતાં મને ભગવાને તો કામ કરવા માટે હાથ પગ આપ્યા છે અને હાથ પગ દ્વારા કામ કરીને હું જાત મહેનત કરીને ખાઈશ તો મારે કોઈનું હોશિયારું પણ રહેવું નહીં પડે। અને પછી ત્યારથી એ નિશ્ચય કરે છે કે આજથી હું મારા હાથ પગનો ઉપયોગ કરીને કામ કરીને જ મારું ભરણ પોષણ કરીશ। તો બાળ મિત્રો આ સ્ટોરી પરથી આપણને શું શીખવા મળે છે, શું જાણવા મળે છે? હા, જાત મહેનત जिंदाबाद। શું શીખવા મળે છે આપણને? जात मेहनत जिंदाबाद, कि हम खुद का अपना कार्य खुद करना चाहिए। दूसरी क्या सीख मिलती है? परिश्रम एज पारसमणि, मतलब खुद परिश्रम करेंगे तो पारसमणि मतलब एक मोती के समान है हमारी मेहनत। ठीक है, तो ये थी एक स्टोरी। वैसी ही सेम टू सेम स्टोरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसका लेखक का नाम है पन्नालाल पटेल। मेहनतनो रोटलो એ શું છે? એક શ્રમ, સ્વાશ્રમ અને પ્રમાણિકતાનો બોધ આપણને શીખવે છે। આ મહેનતના રોટલામાંથી આપણને કઈ શીખ મળે છે? શ્રમ, જાતે મહેનત કરવી, અને પ્રમાણિકતા, ઓનેસ્ટી આપણને શીખવા મળે છે। આ લેખકનું નામ છે પન્નાલાલ પટેલ। એમનો જન્મ થયો છે 1912 માં રાજસ્થાનના માંડવી શહેરમાં થયો હતો અને તેમનું મૃત્યુ થયું હતું 1988 માં। આ જે પન્નાલાલ પટેલ હતા તેમણે ઘણી બધી નવલકથાઓ લખી છે। માનવીની ભવાઈ, મળેલા જીવ, એ બધાની તેમની ખૂબ જ પ્રખ્યાત નવલકથાઓ છે અને આ નવલકથાઓ લખી ગુજરાતી સાહિત્યમાં એ માટે તેમને ઘણા પુરસ્કારો પણ મળેલા છે। તેમણે રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક મળેલો છે। તે ઉપરાંત ભારતીય જ્ઞાનપીઠ નામનો પણ પુરસ્કાર મળેલો છે। તો આ થઈ આપણા લેખકનો પરિચય। હવે આપણે જઈશું ગુજરાતીના પાઠ્યપુસ્તક તરફ, આ પાઠના તરફ। તો હવે મહેનતના રોટલામાં એક કાશીનગરમાં એક મોચી રહેતો હોય છે। કોણ રહેતું હોય છે? મોચી। મોચી यानी कि કોબલર। તે ખૂબ જ પ્રામાણિક હોય છે, સાહસી હોય છે, ખૂબ જ મહેનતુ હોય છે। પણ એકવાર સાધુ આવે છે મોચીની પાસે અને કહે છે કે મોચી ભગત, મારા પગરખાનું શું લેશો? કે મારા પગરખા તમે હોય તો મને આપો। આપણે પણ કોઈ શોપમાં જઈએ શૂઝની કે ચપ્પલની, ત્યાં પગરખા એટલે શું? પગમાં પહેરવાનું એક ચંપલ। ઠીક છે, સેન્ડલ ને ચંપલ જે આપણે પગરખા એટલે પગમાં પહેરવાનું સાધન। તો હવે કહે છે કે મારા પગરખાનું શું લેશો? એટલે મોચી શું કહે છે કે મારી પાસે તૈયાર પગરખા તો નથી, પણ જો તમે કહો તો હું તમને તમારા પગના સાઈઝના પગરખા સીવી દઉં।
તો હવે એ કહે છે કે તમે સિરેલા પગરખાનું શું લેશો? તો મોચી ભગત શું કહે છે કે 1.5 રૂપિયો. 1.5 રૂપિયો યાની કે 1.5 રૂપિયો. 1.5 રૂપિયો યાની કે 1.5. ठीक है, કેટલા રૂપિયા? 1 રૂપિયો અને 50 પૈસા લઈશ. બરાબર, 1.5 રૂપિયો લઈશ. હવે साधु કહે છે कि બધા બીજી દુકાને હું પૂછવા ગયો, दूसरी दुकान पे मैंने पूछा तो सब मोची कितने बोल रहे थे? 2 रुपये बोल रहे थे, और मैंने भावताल करवा के फिर 1.5 रुपये पे लाया था उन सबको. लेकिन ये वाला मोची तो कैसा है, सीधा 1.5 रुपये ही बोल रहा है. फिर साधु पूछ रहे हैं लास्ट का भाव क्या है? तू मने साचो भाव कही दे कि 1.5 रुपये છે તો શું મને 1 રૂપિયામાં તું સીવી આપીશ? वो मोची बेचारा हंसता है उसके सामने कि नहीं साधु, मैं जो बोलता हूँ वही मेरा भाव है. मेरे कहने के और लेने के पैसे अलग, जो बोलता हूँ वही पैसे में लेता हूँ, मैं भावताल करता नहीं. मेरा फिक्स भाव रहता है कि आपको लेना है तो लो, वरना रहने दो, मैं तो 1.5 रुपये ही लूंगा. फिर क्या होता है, वो साधु पूछता है कि तुम मुझे वो जूते दोगे कब बना के? तो वो बोलता है परम दिवस है. परम दिवस से मतलब आज का दिन हुआ तो कल का दिन को गैप करके स्किप करके परसों का दिन. परम दिवस यानी परसों के दिन यही टाइम पे आके ले जाओ. मतलब शाम के समय को वो जाता है तो परसों शाम के टाइम पे आके ले जाना. लेकिन साधु को तो विश्वास नहीं होता, उसको लगता है रोज जैसे कोई हमें धक्का खिलाता है कि आज नहीं बने हैं तो कल आके ले जाना, शाम को आके ले जाना. साधु को ऐसे ही लगता है कि ये मोची मुझे टाइम पे जूते देने वाला नहीं है. फिर वो दूसरे दिन मोची के पास जाता है और पूछता है कि मेरे जूते हो गए क्या? तो वो मोची भगत क्या बोल रहे हैं कि ना હમણાં નથી બને, અમે તમને પરમ દિવસનો ટાઈમ આપ્યો છે ને કાલનો, તો કાલ સાંજ સુધીમાં બની જશે. फिर उसे रहा नहीं जाता. फिर वापस दूसरे दिन सुबह में जाके जाता है मोची के पास और बोल रहा है मोची भगत मेरे जूते हो गए क्या? तो वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं, मैंने शाम का टाइम बोला है. तो जैसे ही वो शाम के टाइम पे पहुंचता है और उसके जूते रेडू रहते हैं. फिर वो बोलता है कि શું તમને દુનિયા જૂઠી છે તેવી રીતે હું પણ તમને જૂઠો लागू છું? दुनिया हर रोज कुछ ना कुछ बाबत से झूठा बोलती रहती है, तो क्या मैं आपको भी झूठा लग रहा हूँ? सब लोग एक तरह के नहीं होते, जिसने जिस टाइम पे बोला है वो टाइम पे आपको मिल जाएगी. फिर मोची भगत से वो बहुत खुश हो जाता है कि इसने मुझे टाइम पे जूते दे दिए. तो वो जो साधु होता है उसको 2 रुपये देता है. कितने रुपए देता है? 2 रुपये देता है. और फिर क्या बोलता है कि उसके पास छूटे होते नहीं है मोची भगत के पास, तो फिर वो खड़ा हो जाता है और दूसरी दुकान से वो परचूरन लेने के लिए जाता है. दूसरी दुकान से परचूरन, परचूरन यानी क्या होता है? चिल्लर. जो 2 रुपए के होते हैं तो उसको चिल्लर में 1.5 रुपये उसको लेने हैं, 50 पैसे वापस उसको देने हैं. तो दूसरी सामने उसके पास छूटे नहीं होते तो दूसरी दुकान से वो छूटे लेने जाता है. फिर वो साधु होता है, बोल रहा है कि रहने तो तुम्हारे पास 2 रुपये, मुझे नहीं चाहिए 50 पैसे छूटे, इससे आप तम्बाकू लाके पी लेना. वो बोल रहा है मोची भगत मैं तम्बाकू नहीं पीता हूँ महाराज. फिर वो बोल रहा है साधु तम्बाकू पीते नहीं हो तो कुछ नहीं, जो ये जूते सिलने की डोरी है, धागा, वो लाके खरीद लेना और मुझे पैसे वापस चाहिए नहीं. तो मोची भगत શું કહે છે કે મને આવું ફોકટના પૈસા જોતા નથી, હું તો મારી મહેનત કરીને જે પૈસા મળે તે જ હું રાખું છું, મને મફતનો પૈસો જોતો નથી. એ કરીને સામેની દુકાન પર જાય છે ત્યારે સાધુ શું કરે છે, પોતાની જોડી यानी કે ખભા પર જે થેલો લગાવેલો છે એમાંથી એક પારસમણી કાઢે છે. શું કાઢે છે? પારસમણી. પારસમણી यानी कि जो जिसके स्पर्श मात्र थी उसको सोना में रूपांतर થઈ જાય. लोढ़ू જે હોય, पारसमणी का मतलब क्या होता है? જેના સ્પર્શ માત્રથી लोढ़ा यानी आयन सोनाમાં રૂપાંતર કરે. ठीक है, पारसमणि मतलब ऐसा पत्थर होता है जिसको हम लोढ़ा मतलब लोखंड पे घिसते हैं तो वो सोने में बन जाता है. तो साधु के पास ऐसा पारसमणि होता है, तो वो क्या करता है, जैसे वो सामने वाली शॉप पे जाता है चिल्लर लेने के लिए, तो वो उसके जो औजार है, उसके साधन है जो सूज और सवेरा बनाने के लिए, तो वो क्या करता है, वो पारसमणि से उसको घिस देता है. तो उसके जो सारे औजार हैं वो किस में बन जाते हैं? सोने के बन जाते हैं.
फिर वो जो छूटे लेकर आता है तो उसको देता है। फिर साधु बोलता है मुझे भिक्षा के लिए थोड़े बहुत चने दे दो खाने के लिए। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास चने तो नहीं है, तो वो 1 रुपया और दे देता है कि ये चने की बीज है, ये 1 रुपया रख लो आप, ताकि इसके आप चने लेकर खा लेना। तो साधु बोलता है ठीक है मेरे पास चने तो है थोड़े बहुत, मैं खा लूंगा। वैसे करके साधु निकल जाता है। और जब वो मोची भगत પોતાની દુકાને આવીને જોઈ છે કે મારા બધા ઓજારો તો સોનાના થઈ ગયા છે, अभी सोने के औजारों से कोई काम करेगा, जूते लगाएगा अपने सोने की चीज पे? तो ये શું કરે છે, એ બધા જે સોનાના ઓજારો હોય છે તે ખૂણામાં નાખી દે છે। मतलब उसको उस औजारों से काम करना नहीं है, उसको पता चल जाए कि ये सारा कार्य किसका है, वो साधु का है। तो ये सोनाના ઓજારોને ખૂણામાં નાખી દે છે અને માળિયામાં પડેલા બીજા જે જૂના ઓજારો હોય છે ઘસાઈ ગયેલા એ ઓજારોને કાઢીને પોતાનું કામ આગળ કરે છે। પછી 1 વર્ષ જેવું समय निकली जाए છે, 1 साल जितना समय निकल जाता है। फिर क्या होता है कि वो साधु वापिस आता है और जो मोची भगत होता है वो नीचा देख के अपना काम किए जाता है। लेकिन उसकी आवाज से वो मोची भगत काम तो बराबर चाले छे ने, तो वो साधु की आवाज पहचान लेता है और फिर वो बोल रहा है कि मेरा काम तो अच्छे से चल रहा है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि औजार बगड़ी गया था ते तमे तेज साधु छो ने। वो क्या बोल रहा है मोची भगत, आपने जिसने मेरे सारे औजार बिगाड़ दिए थे वही साधु हो ना। तो वो साधु को आश्चर्य लगता है, नवाई लगती है कि मैंने उसके औजार बिगाड़े नहीं थे बल्कि सोने के करके दिए थे। उसको मेरा आभार मानना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, उसकी बजाय ये तो मुझे डांट रहा है ना। सोने की कील करके कोई दे रहा है तो हमें उसको थैंक यू कहना चाहिए, उसकी वजह ये क्या बोल रहा है, मुझे डांट रहा है। फिर वो क्या बोल रहा है कि मानस साधु ने वहम पड़્યું કે આ બિચારો સોનાના બદલે શું વિચારે છે કે પિત્તળના औजार બન્યા હશે, એવી રીતે વિચારીને એને ખૂણામાં નાખી દીધા હશે। साधु ऐसा सोचता है, उसको पता नहीं चल रहा शायद कि वो सोने के औजार है, वो कोई दूसरी धातु के समझ के उसने ऐसे साइड पे डाल दिए होंगे। फिर वो क्या होता है कि મને ખબર છે મહારાજ કે તમે સોનાના औजार બનાવ્યા હતા, પણ મારા બાવડાના બળથી મેળવ્યું થોડું હતું। બાવડાના બળથી મેળવ્યું એટલે मैं मारा जात मेहनत थी मेळव्यू न हतु। वो सोने के औजार थे, मुझे पता था महाराज, लेकिन मैंने मेरे जात मेहनत से वो बनाया नहीं था। बावड़ाना बळथी એટલે કે जात मेहनत, बावड़ाना बळथी यानी कि जात मेहनत। वो क्या बोल रहे हैं, सोने के औजार मुझे पता है, लेकिन वो मैंने अपनी मर्जी से मैंने मेहनत करके बनाए नहीं थी, इसलिए मैंने उसको साइड पे रख लिए और मैंने 1 साल मेहनत करके फिर वापस नए औजार बनवाए हैं। तो फिर वो बोल रहे हैं कि भगवाने तने हाथ पग आप्या छे एनु शुं महाराज। नवाई भरी आंखे साधु तो मोती भगत सामे ताकी ज रह्या। मोचीए कह्युं साधु महाराज, भगवाने हाथ पग कई बैठा बैठा खावा माटे थोड़ी ना आप्या छे, काम करवा माटे आप्या छे। आ सांभળી साधु बोल्या, मोची भगत વાત સાચી છે, ભગવાને કામ કરવા માટે જ હાથ પગ આપ્યા છે। હવેથી હું પણ હાથે કમાઈને જ ખાઈશ, તમારા જેવા જીવનનો સાચો આનંદ મેળવીશ। अभी साधु भगत जो होता है वो क्या बोल रहा है कि मुझे पता है कि भगवान ने हाथ पग दिए तो अभी भी मैं भी आपकी तरह काम करके ही खाऊंगा, ऐसे भिक्षा मांग के खाऊंगा नहीं। साधुए કહ્યું હું મૂંગો નવી થઈ ગયો, વિચારમાં પડી ગયો છું। સ્વ વિચારમાં પડી ગયા છો મહારાજ, मैं तमने કહ્યું એ ખોટું છે, તમારી વાત નથી મારી વાત છે। સાધુએ મોચી સામે ગંભીર ભાવે જોઈને કહ્યું, હું પણ નાનું મોટું તપ તો કરું જ છું, જે મારી પાસે સોનું બનાવવાનું સાધન છે છતાં એનો ઉપયોગ મેં મારા માટે કર્યો જ નથી। ભિક્ષા માંગીને પેટનો ખાડો પૂરું છું। પેટનો ખાડો પૂરવો એટલે કે જીવન નિર્વાહ કરવું। શું કરવું कि मैं भिक्षा, सोने का साधन मेरे पास भी है, मैं चाहूँ तो मैं भी हर चीज सोने की कर सकता हूँ मेरे लिए, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं कि मैं भी भिक्षा मांग के पेटनो खाड़ो पूरू। पेटनो खाड़ो पूरू यानी कि जीवन निर्वाह करવું। पेटनो खाड़ो पूरવો એટલે કે જીવન નિર્વાહ કરવો। क्या बोल रहा है कि मैं भी भिक्षा मांग के अपना भरण पोषण कर रहा हूँ। आ रीते भिक्षानो जे घरवा मारामां हतो ते पण गाળી नाख्यो छे। आज
આજથી તમે મારા ગુરુ અને આજથી તમે मारा सेवा में हाजिर रहो। वो गुरु भी बेचारा जो साधु था वो मोची भगत की बात में आ जाता है। वो बोल रहे कि सही बात है कि हमें खुद मेहनत करके खाना चाहिए, प्रामाणिकता से खाना चाहिए। और साधु भी जो मोची भगत है उसको अपना गुरु मानने लगता है कि मोची की बात सही होती है। श्रम और स्वास्थ्य और खुद प्रामाणिकता से जो खाने को मिलता है वो खाएंगे तो हम भगवान भी हमारा भला करेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट होती है और इसके बाद फिर जो साधु भगत और मोची दोनों होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और तब से साधु भी क्या होता है, अपनी मेहनत खुद करके खाने लगता है। वो भिक्षा मांगना और फिर ऐसे गलत कार्य करना छोड़ देता है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।